अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अ लॉट टू टॉक अबाउट। मगर आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि क्रिकेट पे बिल्कुल बात ना हो, बिकॉज और भी स्पोर्ट्स है जिन पे फोकस करना हमें ज़रूरी है। सो येस, क्रिकेट के अलावा जो है डिस्कशन होगी। आज हमारा फोकस होगा पाकिस्तान हॉकी पे, नॉट एक्चुअली द गेम बट जो पाकिस्तान हॉकी से रिलेटेड है, यानी पाकिस्तान हॉकी के कोच का एक मामला चल रहा है। सो एकमन हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान रेसलिंग के हवाले से भी बात करेंगे, बिकॉज द स्टार रेसलर ऑफ पाकिस्तान इज़ गोइंग फॉर अनदर जर्नी। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे वो अब फिर से, और क्या प्लानिंग्स हैं, क्या कर रहे हैं वो भी हम जानेंगे आज के शो में। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है फैसल, इलियास। और आज के शो में, आज का शो बेसिकली स्पेशल है फॉर द फैंस जो हॉकी को फॉलो करते हैं और बीच रेसलिंग को स्पेशली फॉलो करते हैं। बीच रेसलिंग के प्लेयर इनाम बट आज हमारे साथ होंगे, जिन्होंने काफ़ी मेडल्स पाकिस्तान के नाम किए हैं। लेकिन सबसे पहले हमने गुज़श्ता रोज़ जो एकमन से इंटरव्यू किया है, पाकिस्तान हॉकी के फॉर्मर कोच, उनके हवाले से जो क्वेश्चन हमने किए हैं और जो उनके आंसर्स हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। हम जो है खुशामदीद कहते हैं अपने शो में दी फॉर्मर कोच ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम सेक्फ्रिड एकमन हमारे साथ मौजूद हैं। हाय सेक्फ्रिड एंड वेलकम टू द शो। Oh, thank you for having me. So let's start this discussion, Siegfried, and start it from the top. Let's just go back some time and let's just talk about it. That what made you take the task for Team Pakistan and PHF? How did you came across to Team Pakistan, and did you put some terms and condition with them, and did they agree to those terms and conditions when you started off with your job? Yes, of course. Well, they asked me to come to Pakistan, okay, and they wanted to major change. They wanted to build a team for the future, and they wanted to come back to the top of the international hockey. So I accepted the challenge. We would work with a young team, and we would develop that team step by step, a team who can perform. Okay. So I told them that if you want a magician and you want instant success, then you don't need to take me, because I'm not. But if you want to build steadily to a new team, I can do it, and that's something I want to do. So we talked about it. We made a planning for World Cup 2026. Yeah. And in that time, we wanted to be compatible with the teams, try to do our best. If we qualify for some tournaments, would be great. If not, it's part of our team. And I started with, I took 12 players from the junior team, yeah, they ended 11 at the World Cup. And that team I start building up, and I think we did very well. And under those circumstances, we agreed to do it. But always in Pakistan, there's a lot of things going on. Yes. And the leadership which was there, Babar, who brought me in together with the president, the leadership changed. Yes. And in the beginning, we worked well. We did some things. Of course, it's also funding and having the right equipment was difficult, but that I can understand, because if you want to do something like this, yeah, you have to make major changes, and it's a system change, and that system takes time. And meanwhile, people always expect instant success. All right, Ekman, you But on spoke those about terms and conditions. yeah, Pakistan Hockey Federation agreed. I had some request list from stuff which I needed, yeah, to do the job, and they also agreed on that. okay. All right. So, Ekman, you spoke about working with the players, and obviously a coach has to have these great relationships, working relationships with the players. So, if we ask you, what is your take on the skill set, the agility, the passion of Pakistani players, and like you said, it doesn't change overnight. It takes time to develop a team which is going through difficult times. So how do you see Pakistani team going from here? And also, what were the difficulties that you actually faced when you were here with Pakistan team? Well, yes,
coming back on that, Pakistan doesn't have a real coaching structure. So they don't have a structured vision on hockey. So coaches are mostly coaches who played before, and they teach from what in the past. But hockey is developed to a science, and coaching is a science. It works on sports science. So I saw that Pakistani hockey players can dodge very well, but they lack a lot of basic skills, and basic skills in relationship to how to apply those in a tactical way, because the tactical part did not develop. So it's actually very interesting. So when we speak with any of the hockey players over here in Pakistan, they'll always say that we are still the best. But you know, when we speak to you, we get to know that they lack on the basic skills, which is an interesting fact. Well, if you look at them, they touch, they make a lot of touches. The first touch is always one with the head down, and they have little overview. So they make many touches. Many touches means you're slowing down the game. Your opponent can regroup, can reorganize, can put pressure on you. So you need to do it in one touch, and that one touch needs to be good. And when you make that touch, you need to have an overview. Well, they were unable to do it. If you talk about defending skills, most players don't know what defending skills are. When I had them in the national team, I teach them how to defend, how to do their footwork, to what it mean, what kind of skills do you have? Do you delay? What are the principles of defending play? And how do you want to defend to attack? We were defending to attack. So we want to win the ball and then quick counter-attack and try to win space and go to the goal as soon as possible. So, because that's also the character of Pakistan hockey. But you need to win the ball. And when I came here, we got many cards, we got many fouls, because the defending not developed. And we worked very hard to improve the defending skills and directly utilize the advantage you have. And those things were not known by the players. So they had seen some on TV, but especially the skills about the footwork, about the body position, about the grip, about the timing. So those things is what they have to learn. And if you have a good coaching structure, you can teach your coaches, and then when players come to the national team, they are ready from a higher level. Nowadays, they come and we have to teach them everything. And that means that if you make changes in the group, you need to start all over again. Exactly. By your statement, I get that if we talk about the domestic structure of hockey, which means if you had to train so much and you had to make these players learn so much at the higher stage, which means that this domestic structure and the way they have been progressing forward to the main team, that was not a right procedure then? No, and because of that, Pakistan had a downfall in ranking. Yeah. You can see it at the world ranking. When I came, I think we stopped the downfall and we started to improve step by step. We tried to improve the ranking again. And so, we were not there yet. Sorry for cutting you in between, but was this the main reason that we could not do better in the Asia Cup or in the Commonwealth Games? Because we were nowhere close to the top 3. We were ranked 7th in the Asia Cup and in the Commonwealth Games and 5th in the Asia Cup. Yes, but look at the Commonwealth Games. We were the lowest ranked at the Commonwealth Games. True. So if you become 7th, you did a good job. But that's not what, if you are looking at it from building up. If you look at it from we need to win, then you didn't do a good job. Because we didn't win. We became 7th. But look at where we come from and where we were going to. And you could see that our play was improving. Our players were doing better. For instance, our match against Australia is a nice one. We created many goal-scoring opportunities. We created corners. We did well.
but we lost the match 7-0. Everybody blamed us for losing 7-0. Then Australia played against India in the final. They beat India with 7-0. And India was much higher ranked. Yes. And they didn't create corners, they didn't create chances. So actually we did, at that moment, we did better than India did against the mighty Australians. And so those things are very valuable. And if you put it in the right perspective, players can grow. But if you blame everything, then their confidence will go down. And then we have to work harder to get their confidence back. All right, But so it's, Ekman, look, we cannot be the top of the world instantly. We need Obviously. to get step by step. India did 20 years about this to bronze medal at the Olympics. And exactly And how long Pakistan were wants you to with do the it in Pakistan team? 1 year. Sorry? Exactly how long were you with the Pakistan team? I've been there 1 year and 2 months, I think. Yeah, so it's a lot, asking a lot from you in 1 year and two, because I believe the Pakistan team was building and it was starting to grow further, but we need to have patience. and also Ekman, related to the same question, if we want to ask you for our viewers as to why did you resign from your position? Yes. And what was actually the salary issue that raised after you left? And whether it's PHF who is supposed to pay your salary or it's PSB which is supposed to pay your salary? Just for the clarity, Ekman, while signing the contract, was that the Pakistan Sports Board that committed for giving you salary, or was it the Pakistan Hockey Federation? It's a difficult one because I signed a contract with Pakistan Hockey Federation. Okay. And Pakistan Hockey Federation deal with sports board that they would cover the cost, my salary. And they did, I think, because I got paid first half year. Okay. And but I had signed with Pakistan Hockey Federation. And you got And paid as a through coach- Pakistan Hockey Federation, or was Yes. it by PSB? Who was paying you when you were paid I the was salary? paid through Pakistan Hockey Federation. They Okay. paid me. Okay. So and they were the then, ones who were supposed to pay the remaining amount as well. Yes, I had a contract, Yeah. but they had a contract or an agreement with sports board Yeah. because Asif Bajwa always said that the government guaranteed my salary, the Pakistan Sports Board. He said it in many interviews, Yeah. but as a coach, you have a contract with the federation because those are the ones who hired me. Ekman, do you mind telling me how much amount is left that is supposed to be paid to you? It's about 100,000 euros. Whoa. A lot of amount. And we are hearing that you are also going for some legal action. Is that true? And will it be against PHF, against Pakistan Hockey Federation? Because No. you have the agreement with them. The problem is Yeah. there is little legally to do because I go to CAS or to a judge, they will be, will probably win the scene. But who will pay? They will not pay because they cannot pay. Because money from the government to fulfill their commitments. They don't get the money to pay. What can you do? So that's also the reason why I worked for 1 year, because I wanted to keep working with the players and do the Yes. job. I understood that it's difficult for Pakistan Hockey Federation to pay the money, but they need to have private sponsors. Yes. And one of the things which is, of course, disturbing, that they get some money somewhere and they didn't even pay me. Yes. And Because that's something which is strange. yes, because last time around, I Because- believe in Commonwealth Games, our correspondent spoke to you, and Yes. even then you complained that your salary has not been paid.
I was paid till last salary was April last year. Whoa. Very And bad situation. at the time, they said they were telling me it's coming and the will pay. Sports board has the checks signed, so it's a matter of time. But it never came. And meanwhile, I was using my savings. Yeah. And at a certain moment, my savings are gone. And then I have to do something else. And that's the moment that I had to depart. Because I really wanted to keep working with the players. They were, the players working very hard. They enjoyed, they asked me to continue. But what can I do? At a certain moment, I also have a family. Exactly. You and did what you could do, yes. So you think that you have reached a deadlock where you think that nothing can be happen further? Can you come back again? Do you think that you have reached a deadlock and nothing can be done further? Well, I will probably commit to somewhere, to another country. So I will not be the one to come back because that opportunity is gone. Maybe in the future again, somewhere in the future, because the hockey world is a small world, and passion for hockey in Pakistan, because that's the reason why I picked up the job. I really wanted to bring Pakistan back. I think Pakistan should be back, and the hockey world need Pakistan to be back. So that was the reason why I give it all to get there. Yeah. But unfortunately, the circumstances, the fight between Sports Board and Pakistan Hockey Federation doesn't help. But I'm not part of that fight, but I was the one, at the end, I'm the one who was punished. We are honestly so sorry, and this is such a sad state. Something that I would love to know. Did you try contacting the Pakistan Sports Board on this issue? I sent them letters. Okay. I To the asked them Pakistan Sports Board. Yes, and to the Prime Minister's office and to the Minister of IPC. Okay. And they never replied. So what can I do? That is a really sad state, and doing this with somebody who has such a heart for this sport. Yes. And so the only thing we can say is we are very sorry for this, and people who are watching this show must take some action. No, and I don't know whether we can promise you that, but we'll make some noise regarding this issue. Definitely we'll make some noise regarding this issue. And Siegfried, I hope that your dues must be cleared, and I hope we can just be some help in that. And I hope that our voice can reach to the Pakistan Sports Board or to the IPC ministry, and we'll try our level best. I hope so too. Thank you very much for your efforts. I appreciate it. Thank you. Thanks a lot, Siegfried, and thanks a lot for being here and taking out time, and good luck for your future endeavors, and thank you. Thanks a lot for being here. You're welcome. Thank you too. Bye-bye. Thank you. Thanks a lot for your interview, and how disappointing, Faisal. मतलब मुझे लगता है कि आज ये डिस्कशन करते हुए शायद मैंने इतना एम्बैरेस्ड फील नहीं किया होगा कभी जितना आज ये डिस्कशन करते हुए मैंने एम्बैरेस्ड फील किया है. एक शख्स जो कि आके पाकिस्तान टीम की कोचिंग करता है, पाकिस्तान की लेगेसी से इंस्पायर होके, एंड देन हम उस शख्स के साथ जो है ये बिहेवियर वो करते हैं कि उसकी सैलरी नहीं पे करते. दिस इज सो डिसअपॉइंटिंग एंड सो हार्ट ब्रेकिंग. और जो आज हमारे व्यूअर्स इंटरव्यू देख रहे होंगे, जिस तरह आपने कहा, वाकई उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर था पाकिस्तान हॉकी के लिए, और पाकिस्तान की जो हिस्ट्री रही है हॉकी के हवाले से, वो इतनी रिच हिस्ट्री रही है, जिसको देख के एक कोच आता है, वो आपके प्लेयर्स को ट्रेन करना चाहता है, और जो उसकी बेसिक
चीज़ है जो आप किसी भी इदारे के लिए काम करते हैं, वो आप यू एक्सपेक्ट, और हमारा तो दीन भी कहता है कि मजदूर की वो पसीना खुश्क होने से पहले आपको सैलरी देनी है उसकी, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट, एब्सोल्युटली इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की कोताही है या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की कोताही है, वो इसको फुलफिल करें, उसको पूरी करें। हमारी रेपुटेशन एट स्टेक है। पाकिस्तान में आकर कौन फॉरेन कोच जो है वो काम करना चाहेगा अगर उनकी सैलरीज पे ऑफ नहीं होंगी? तो बराए मेहरबानी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सॉर्ट आउट करें और इसको सेटल करें, बिकॉज दिस गिव्स अ वेरी 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 नेगेटिव इम्पैक्ट एंड इमेज ऑफ पाकिस्तान। मगर वक्त अभी एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जाएंगे, मगर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो थोड़ी ज़रा इस सैडनेस को कम करेंगे और एक अच्छी बात ये करेंगे कि एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से, एक अच्छी, वो कहते हैं ना, दुआओं के साथ, बहुत सारी बेस्ट विशेस के साथ अपने स्टार पाकिस्तानी रेसलर इनाम बट को जो है हम इस नए इवेंट के लिए रुखसत करेंगे, मगर उससे पहले उनकी प्लानिंग भी पूछेंगे। सो आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक इनाम बट विल बी विद अस। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। और ज़रा मैंने कहा ना, माहौल को तब्दील करते हैं, उस एंगर और सैडनेस से निकलते हैं जो कि अभी भी कहीं डिजेक्टेड, डिसअपॉइंटेड मैं फील करती हूँ। जिस तरह हमारी अभी इस वक्त एकमन से बात हुई है, और बहुत ही मतलब एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ लगती है कि जब एक बंदा कहता है कि मैं केस भी क्या करूं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास पैसे नहीं है, मुझे पता है, तो उनके ऊपर केस करके मैं अपना और ख़र्चा करूं, सो उससे बेहतर है मैं कुछ ना करूं। बट मूविंग ऑन फर्दर, अगर अब हम बात करें पाकिस्तान रेसलिंग के हवाले से, सो पाकिस्तान रेसलिंग की जब भी बात आती है तो एक नाम ज़रूरी है जो आपके जहन में आता है, और वो एक नाम आज हमारे साथ मौजूद है। और वो इसलिए मौजूद है क्योंकि अगले इवेंट में वो जा रहे हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए। वर्ल्ड बीच रेसलिंग का इवेंट जो है वो 10 से 11 जून सिंगापुर में होने वाला है, और हमारे स्टार रेसलर इनाम बट जो हैं वो खूब तैयारियां कर रहे हैं उस इवेंट के लिए। सो इनाम को हम खुशामदीद कहेंगे अपने शो में। इनाम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। अस्सलाम वालेकुम इनाम। जी वालेकुम, कैसी हैं आप? जी माशाल्लाह, फॉर हैविंग मी ऑन दिस ब्यूटीफुल शो। बिल्कुल जी, खैरियत से हैं, आई होप आप भी खैरियत से होंगे। इनाम, तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी एफर्ट हो रही है। गुजरांवाला में हमारा पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने कैंप लगाया हुआ है, और जितने भी पाकिस्तान के अच्छे हैं वो यहाँ पर कैंप में मदऊ हैं, और तैयारियाँ हम और बड़े ज़ोरों शोर से जारी हैं, और उम्मीद है कि अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाएगा और पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह मेडल जीतेंगे इंशाल्लाह। इनाम भाई, फैसल हियर, आपकी तो शक्ल देख के बड़ा एक इंकरेजमेंट भी मिलती है जितने भागे मेडल्स जिताए हैं, लेकिन ये जो अब अगले टूर्नामेंट में आप जा रहे हैं वो एशिया में पहली बार हो रहा है। आपको लगता है कि थोड़ी डिफ़िकल्ट कंडीशंस हो सकती हैं, और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी तैयारियों को लेके, कहाँ तक पहुँचेंगे? इंशाल्लाह दोबारा गोल्ड की तरफ टारगेट कर रहे हैं। जी फैसल भाई, देखिए वर्ल्ड लेवल का जो भी इवेंट होता है वो बहुत ज़्यादा टफ में तमाम जो है वर्ल्ड के एलीट खिलाड़ी और वर्ल्ड के मेडलिस्ट उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, और बिल्कुल सिंगापुर में हो रहा है। और मैं तकरीबन 1 साल के बाद कोई इवेंट खेलने लगा हूँ, तो थोड़ा सा होता है कि एक बड़ा मुकाबला है और एक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी वर्ल्ड चैम्पियंस के साथ खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा एक होता है कि आपने उसके लिए तैयारी करनी होती है। लेकिन बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह, जितनी हम अपनी बेस्ट एफर्ट कर सकते थे वो हमने की है, और बहुत उम्मीद है कि हमने अपना इंशाल्लाह बेस्ट देना है, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह मेडल से नवाजेंगे। हम अपना 100 की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और जो है हम सब ये एक्सपेक्ट करते हैं, हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। बट इनाम, वो होता है ना कि एक ग्राफ बनता है एक प्लेयर का। आपने गोल्ड मेडल जीता था पिछली से पिछली दफ़ा, ब्रॉन्ज फिर हुआ, सो सबको ये होता है कि नहीं जी ये गोल्ड मेडलिस्ट ब्रॉन्ज की तरफ आ गया है, हम वापस वो रास्ता जो है वो गोल्ड की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। एक्सपेक्ट करें, हम पहले से तैयार रहें कि इनाम गोल्ड लेकर आ रहे हैं। देखिए बात यह है कि जब भी आपने खेलना होता है मुल्क के लिए, जब मैं जाता हूं तो मेरा जो क्या वो गोल्ड पर ही होती है कि डेफिनेटली हमने गोल्ड ही जीतना है। लेकिन जब हम वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करते हैं तो उस पर डेफिनेटली बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो गोल्ड ले होते हैं, तो 19-20 का फर्क हो 20-20 का फर्क होता है। कभी आपकी लक चल जाती है, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन टारगेट एक ही होता है कि हमने गोल्ड जीतना है, सबसे ऊपर जाना है। पाकिस्तान का कौमी तराना चलना चाहिए, तो मकसद और टारगेट लिया है। बाकी जो हमारे अल्लाह ताला जो हमें कर देंगे, जो हमारे नसीब में होगा वो मिलेगा। हमने अपना 100% से
हील है, लोग दुआएं कर रहे हैं और हम अपनी इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा। इनाम भाई, गवर्नमेंट का और स्पोर्ट्स बोर्ड का किस तरह का सपोर्ट है आपके साथ? डू यू फील कि आप उस तरह के, जिस तरह के आपके कारनामे हैं, जिस तरह के आप सेलिब्रिटी हैं, आर यू बीइंग ट्रीटेड द सेम इन द सेम मैनर, या आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें डिफरेंट होनी चाहिए? देखें, ओवरऑल जो सूरत है ना, वो हर जगह उसका इम्पैक्ट नजर आता है। अगर आप एलीट खिलाड़ी की बात करते हैं, लेवल की बात करते हैं, तो कम से कम 8 से 10 इंटरनेशनल लेवल पर एक खिलाड़ी को टूर्नामेंट मिलने चाहिए, जो यके बाद दीगरे उससे खेलने चाहिए। हर 1 से 2 माह के बाद आप चाहिए, लेकिन फॉर्चुनेटली उस तरह से नहीं हो पा रही। बड़ी मुश्किल से एक आधा जो वही मिल पाता है। तो इस चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो प्राइवेट स्पॉन्सर हैं उनको आगे आना चाहिए। और बट इनाम, अभी अगर मैं बात करूं, कल गालिबन आपकी जो है वो रवानगी है 7 जून को। सो अभी अगर मैं बात करूं तो अभी इस इवेंट पे जाने से पहले क्या स्पॉन्सरशिप्स का इशू हुआ, फाइनेंशियल इशू हुआ? क्योंकि यूजुअली ये इशू सामने आता है। देखें, मैं यही बात कर रहा था कि जब भी आप जो भी एलीट खिलाड़ी होता है उससे 10 से 12 इंटरनेशनल जो है वो टूर्नामेंट एक चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह से तो नहीं हो पाता। ब्रांड एम्बेसडर 2023 मुंतखब किया है, और ये जो इदारे हैं ये जब साथ मिलते हैं, जब गवर्नमेंट के इदारे मिलते हैं, जब फेडरेशन और प्राइवेट मिलता है, तो फिर ही इन चीज़ों को मुकम्मल किया जाता है, पूरा किया जाता है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो इवेंट है वो भी मज़ीद खेल सकेंगे और पाकिस्तान मेडल जीतेंगे। आपकी तैयारी में नाम कोचेस और जो फैसिलिटीज़ आपको दरकार हैं, और ऑब्वियसली हर गेम जो है वो जिद्दत की तरफ जाता है और उसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं। सो रेसलिंग के हवाले से जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से आपको लगता है कि कोचिंग और टेक्निकल जो नॉलेज है वो सारी चीज़ें ऑन ट्रैक है? देखिए, जब आप वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप फॉरेन कोचेस आपको मिले, या आप उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप दूसरे कंट्रीज़ में जाएं और जाकर जो इंटरनेशनल और वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ी हैं उनके साथ आप compete करें, उनके साथ आप ट्रेनिंग करें, तो फिर ही आपका रेसलिंग का म्यार बहुत बुलंद होता है। लेकिन पाकिस्तान तरह से नहीं हो पा रहा। पिछले 3-4 इससे भी ज़्यादा देर से कोई इंटरनेशनल ट्रेनिंग का जो है बंदोबस्त नहीं किया गया, ना हम बाहर जा सके हैं। अभी आगे ओलंपिक्स भी आ रहा है, जैसे ये इवेंट है इसकी भी तैयारी हम गुजरांवाला में रह के कर रहे हैं। ये बहुत सारे सर्विंग है। अगर सपोर्ट मिले और इंटरनेशनल ट्रेनिंग है, इंटरनेशनल कोचेज आए, तो बहुत ज़्यादा म्यार मजीद बेहतर हो सकता है। ऑब्वियसली, और बहुत ज़रूरी है कि आप जो हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मॉडर्न गेम को अडेप्ट करते हैं साथ साथ। मगर इनाम, जब मैं बात करती हूँ, आप जो इस तरह के वर्ल्ड इवेंट्स में शामिल होते हैं या कॉमनवेल्थ गेम में, क्या मेजर डिफरेंस है जो आपको दिखता है अपने आप में, और जो मैं लेट्स से पिछले में जिस तरह जिसने गोल्ड मेडल जीता उसमें और आप में क्या मेजर डिफरेंस था? क्या वो वही था, लैकिंग ऑफ ट्रेनिंग एंड मॉडर्न? यही आता है। हाँ जी, मैं बिल्कुल बयान कर रहा हूँ कि फर्क यही आता है कि आप ये देखें कि में हम रेसलिंग की बात करते हैं तो आपको एक ही इनाम बट नजर आता है, उसके साथ ट्रेनिंग पार्टनर जो है वो आपको इस वेट कैटेगरी में अच्छा नहीं मिलता। जिस वजह से जो मेरे जूनियर खिलाड़ी हैं उनको तो सीखने का मौका मिल रहा है, लेकिन मेरा जो सीखना है या मेरा जो आगे बढ़ना है वो एक लेवल पे जाके रुक गया है, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादा अच्छे लेवल के खिलाड़ी की नहीं है। बहुत जरूरी होता है कि जब आप इंटरनेशनल खेलते हैं, जाके इंटरनेशनल ट्रेनिंग करते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, तो वहां पर जाके आप लेवल के खिलाड़ियों के साथ जब ट्रेनिंग करते हैं तो आपको सीखने का मौका मिलता है। इस वक्त जाके जूनियर बच्चे और नए आने वाले जो हैं बच्चे वो मुझसे सीख रहे हैं, लेकिन मुझे जरूरी है कि इंटरनेशनल ट्रेनिंग करवाई जाए, तो वो जो है नहीं हो पा रही कि जो यहाँ पर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं उनको हमने अवेल किया है, जो एफर्ट कर सकते हैं वो की है, और इस एफर्ट के साथ ही हम आगे जाएंगे और अल्लाह के नाम लेकर इंशाल्लाह मैदान में उतरेंगे। बाकी अल्लाह इंशाल्लाह। इनाम, हमें दिख रहा है कि चैलेंजेस तो हैं, चाहे वो आपकी ट्रेनिंग हो, चाहे ज़्यादा इवेंट्स मिलना हो, लेकिन हम जब भी बात करते हैं कि प्राइवेट स्पॉन्सर्स को अदर देन क्रिकेट के जो इवेंट्स हैं उनमें या उन गेम्स में इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन बात ये होती है कि जो प्लेयर्स होते हैं वो ख़ुद भी जो जाके प्लान्स शेयर नहीं करते, वो बताते नहीं हैं कि एक्सपोजर क्या मिलेगा अगर कोई प्राइवेट पार्टनरशिप होती है। आपने ख़ुद से कभी कोशिश की है? आई एम श्योर की होगी, लेकिन व्यूअर्स की नॉलेज के लिए कि वो किस तरह की कोशिश होती है और उसमें क्या चीज़ें अगर और आपको कमर्शियल साइड से सपोर्ट मिले तो वो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं।
देखिए, इसके लिए जो एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है ना, खिलाड़ी खुद सब कुछ नहीं कर सकता। खिलाड़ी अब ट्रेनिंग भी करेगा और वो जाके स्पॉन्सर भी ढूंढेगा, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब मुख्तलिफ हैं वो खिलाड़ियों के लिए स्पॉन्सर ढूंढती हैं। ये एक पूरा, मैं समझता हूँ कि फेडरेशंस का या गवर्नमेंट लेवल पर एक गवर्नमेंट होना चाहिए जो मार्केटिंग करे। आप किसी भी चीज़ की अगर हम बात करते हैं तो मार्केटिंग के साथ वो चीज़ बट एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है जिसको अवेल किया जा सकता है। शादी अब्बास बहुत बड़ी तस्वीर बहुत बड़ी प्रोडक्ट है, तो ये हमारे इदारों का काम है कि इस प्रोडक्ट को सेल करें। इस प्रोडक्ट जो है वो जो लोग हैं उनको यहाँ पर जोड़े, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें। तो देखें, कुछ चीज़ें होती हैं वो लकीली भी हो जाती हैं। डीएचए गुजरांवाला हमारी हैंड होल्डिंग करता है। गुजरांवाला में जब भी कोई इवेंट आता है तो वो हमें सपोर्ट करते हैं। तो वेरी इंकरेजिंग टू सी कि जिस तरह वो कॉन्फिडेंट हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज में होते हुए जिस तरह के उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, इज आउटस्टैंडिंग टू सी। बिल्कुल बिल्कुल। इनाम दोबारा कनेक्ट होगा। आपने गालिबन फिर से ज्वाइन इन कर लिया हमारे साथ। मुझे ये बताइए कि अब जो इस इवेंट के ड्रॉज हमारे सामने आएंगे वो 9 जून को सामने आएंगे। एनी पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट जिसकी तरफ आप देख रहे हैं कि हाँ जी इस कॉन्टेस्ट पे मेरी नजर है, मेरे अगेंस्ट ये बंदा आके खड़ा होना चाहिए, या ये मुल्क का बंदा आके खड़ा होना चाहिए, आप किसके साथ? तो मुझे नजर आ रहा है कि जो हमारे हो सकते हैं अपन में, जॉर्जिया के खिलाड़ी बहुत जबरदस्त हैं। जॉर्जिया जबरदस्त हैं, अजरबैजान के, तुर्की के खिलाड़ी, उसके बाद हंगरी के खिलाड़ी को, तो ये वो खिलाड़ी हैं जिनमें मेडल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मोस्टली। तो इनको मैं देख रहा हूँ, इन पर काफ़ी वर्किंग भी की है, वीडियो एनालिसिस भी किए हैं, इनके जो टेक्निक्स हैं उन पर भी अपनी ट्रेनिंग की है। तो बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन खिलाड़ियों के साथ खेलने मिलेगा और इंशाल्लाह इनके साथ अच्छी फाइट होगी और इंशाल्लाह विन करके पाकिस्तान के लिए मेडल जीतेंगे। इनाम, ये जो टूर्नामेंट होना है कुछ खबर है कि कहाँ टेलीवाइज होना है ताकि व्यूअर्स को पता हो कि कहाँ देखना है? और दूसरा एक सवाल इससे कनेक्टेड है कि ये क्या नॉकआउट बेसिस होगा या इसमें आपको चांस होगा कि एक आध फाइट अगर आप हारते भी हैं तो यू विल स्टिल हैव द चांस कि अगला मैच खेलें? पहला जो होता है उसमें आपको मिल सकता है और उसके बाद जो व्यूअर्स देखना चाहते हैं तो वो जो हमारी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की वेबसाइट है वहाँ पर भी ये लाजमी तौर पर आए जाएंगे। और इसके अलावा भी जो यूनाइटेड वर्ल्ड के मुख्तलिफ जो उन्होंने बनाए हुए हैं फोरम, वहाँ पर बड़ी आसानी से पर भी ये लाइव प्लेटफॉर्म है, उस सब पर आसानी से मुकाबले देखे जा सकते हैं। सो इस इवेंट में इनाम पाकिस्तान से अकेले आप जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस इवेंट इंशाल्लाह हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसको देखने के लिए जो फोरम है वहाँ पर भी देखा जा सकता है। मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उन पर भी ये लाइव इंशाल्लाह मुकाबले चलाए। हमारी ओलंपिक वर्ल्ड बॉडी है वो इसको लाइव टेलीकास्ट करेंगे और साथ साथ जो है लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है इनाम, आपने जैसे कहा कि यंगस्टर्स आपसे सीख रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत सारे यंगस्टर्स आएंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इनाम बट की लेगेसी को कौन फॉलो करेगा, ऑल्दो यू आर ऑल्सो वेरी यंग राइट नाउ, लेकिन आपको लगता है कि हमारे जो नए प्लेयर्स आने वाले हैं, जो यूथ में से जो नए प्लेयर्स हैं जो आपसे सीख रहे हैं और जनरली सीख रहे हैं, वो पाकिस्तान का नाम इसी तरह रोशन करेंगे जिस तरह आप कर रहे हैं, या आपको लगता है कि बहुत सी चीज़ें बेहतर होनी चाहिए ताकि आप जैसे प्लेयर्स और भी, क्योंकि होता ही है कि बहुत सारे प्लेयर्स अपने मोटिवेशन की वजह से, अपने हार्डवर्क की वजह से बहुत आगे निकलते हैं लेकिन फिर यंगस्टर्स उसको फॉलो नहीं कर पाते। सो हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दिस? देखिए, हम तो कोशिश कर सकते हैं, बड़ी कोशिश है कि बच्चे हम आए। गुजरांवाला में जो हम रेसलिंग एकेडमी चला रहे हैं इस पर तकरीबन 100 के करीब हमारे पास बच्चे हैं जिन्हें हम बिल्कुल फ्री ऑफ दे रहे हैं। आप स्पोर्ट्स बोर्ड एक बहुत बड़ा अरीना बना रहा है गुजरांवाला में, जो हमारी एकेडमी है उसको वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड, तो बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे ही वो उसका काम भी बड़ी तेज़ी से हो रहा है, जैसे ही ये अरीना भी कंप्लीट हो जाएगा और इतने शागिर्दों पर जो हम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह बहुत के कई इनाम पर निकलेंगे और पाकिस्तान के लिए बेशुमार मेडल आएंगे इंशाल्लाह। सो इनाम जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान की आवाम को, क्या कहना चाहेंगे? दुआएं करें इनाम के लिए। मैं तो भी कहना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि आप जिस भी चीज़ के लिए कोशिश करें, जिस भी आप फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, बस अच्छे से लगन लगा के, दिल लगा के उसमें एफर्ट करें। अल्लाह ताला ज़रूर आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह मेडल के साथ। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह सिर्फ मेडल के साथ नहीं, इंशाल्लाह गोल्ड मेडल के साथ। इनाम, गुड लक एंड आई होप कि आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो। हमारी तरफ से गुड लक, गेम सेट मैच की टीम से गुड लक, समा टीवी की तरफ से जो है वो आपको बहुत बहुत गुड, और उम्मीद है जल्द आपके साथ सेट पे इंशाल्लाह मुलाकात। एग्जैक्टली
गोल्ड मेडल के साथ इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट। सो जब पाकिस्तान रेसलिंग की बात करते हैं, मैंने आपसे कहा जैसे इनाम बट का नाम जो है वो टॉप ऑफ द माइंड होता है, बट एवरी स्पोर्ट अदर देन क्रिकेट, हम फैसल जब ये पूछते हैं कहीं ना कहीं इशू ऑफ स्पॉन्सर्स, फाइनेंशियल इशू एक आके घेरा तंग कर लेता है। और मैं हैरान होते हैं क्योंकि हम थोड़ा बहुत देख रहे होते हैं, इतने सारे आपके हेल्थ केयर के ब्रांड्स हैं और एक इतना बड़ा नाम है जिसकी शक्ल देख के हम पहचान जाते हैं कि इतना बड़ा स्टार है और वो स्ट्रगल कर रहा है कि कोई प्राइवेट पार्टनरशिप हो जो उसकी टेक केयर कर सके। और आई थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी। इमेजिन कि ये दिस इज अ वर्ल्ड इवेंट दैट ही इज गोइंग टू। अब एक वर्ल्ड इवेंट में अगर आपकी प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रही है, सो व्हाट एल्स डू यू वांट? इससे बड़ी आपको क्या पब्लिसिटी चाहिए? बट जो आपने बात की एग्जैक्टली कि इनको सही तरह ब्रांड बना के बेचा नहीं जाता, दैट इज द बिगेस्ट थिंग, क्योंकि क्रिकेटर्स को तो ब्रांड बना के बेचा जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती क्रिकेट बेचने के लिए, बट बाकी स्पोर्ट्स की जब मैं बात करती हूँ तो ये लोग शायद उस तरह ब्रांड पैकेजिंग नहीं करते जिस तरह करके बेचना चाहिए इनको। बिल्कुल सही बात है। और ये ऐसा लगता है कि वो पैकेजिंग में कहीं कहीं ऐसा लगता है कि शायद क्योंकि इतना विजिबिलिटी नहीं दिखती ब्रांड्स को, तो वो ROI नहीं शेयर किया जाता ब्रांड्स के साथ, विच माइट बी द रीजन कि इतने बड़े सुपरस्टार्स जो है उनके साथ कोई ब्रांड्स नहीं अटैच। ये एक सबसे बड़ा जो है मसला है और शायद इस पे बहुत सोचना चाहिए हमारी फेडरेशंस को, हमारी एसोसिएशंस को, हमारे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को सोचना चाहिए कि वो इस तरह का कोई डिपार्टमेंट बना सकते। मगर खैर अभी तो जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने काम करने वही वो प्रॉपर काम नहीं। बट विद दैट यहाँ पे जो है वक्त खत्म हो गया है गेम सेट मैच का, और आने वाले दिनों में शायद हम कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान हॉकी पाकिस्तान क्रिकेट की तरह लुक्रेटिव हो सकती है, पाकिस्तान फुटबॉल पाकिस्तान क्रिकेट की तरह लुक्रेटिव हो सकती है। कोई ना कोई कोशिश ज़रूर हम ये करेंगे कि किस तरह इसको बेहतर कर सकते हैं। बट विद दैट सवेरा और फैसल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।